How to speak fluent English every day for 7 minutes. Just sitting at home, आप कैसे 7 मिनट दे के अपने आप को फ्लुएंट बना सकते हो। आप 7 मिनट में क्या करोगे, उससे पहले मैं 5 चीजों को आपको बताना चाहता हूँ। ये एक्सरसाइज आपको मोबाइल में करनी है और ये पूरे 7 मिनट को आपको रिकॉर्ड करना है और ये 7 मिनट को आपको 90 डेज तक लेके जाना है। जी हाँ, ये इफेक्टिव तभी होगा जब आप ये 90 डेज तक करोगे। ये प्रैक्टिस करते समय फोकस हमेशा अपने ऊपर रखें। प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको किसी को, आपको खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और जो आखिरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो है, जब भी आप ये प्रैक्टिस करें अपने अंदर में प्रैक्टिस करें। ये नहीं देखे कि आपको बाहर से कौन देख रहा है, अंदर से कनेक्ट होने की कोशिश करे, अंदर से फील करे कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग इन इंग्लिश। अपने ऊपर फोकस करे, किसी और के ऊपर नहीं। सो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ये 7 तरीके और जो आखिरी वाला है ना वो मेरा फेवरेट होगा, तो अंत तक बने रहिए। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा चैलेंज मिलने वाला है आपको आज। सी एंड स्पीक। इस एक्टिविटी को आपको करना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए आपको देखना है और बोलना है। आप कुछ भी देख सकते हो और कुछ भी बोल सकते हो। इवन इफ यू गो रॉन्ग ऑल्सो ग्रामेटिकली, नो प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज द इनिशियल स्टेज। अगर आप इंग्लिश गलत बोलते हो इस स्टेज में तो बहुत अच्छी बात है ये। सो इसमें क्या करना है, आपको देखना है कोई भी चीज और उसके बारे में बोलनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी दिखा ये क्लॉक, अब मैं इसके बारे में बात करूंगा। मुझे कुछ और दिखता तो मैं कुछ और चीज के बारे में बात करता। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसके बारे में 1 मिनट तक बोलना है। I see this clock. Now the time is 8:45. The color of the clock is black. It is very minuscule. It is very tiny. Okay, so there is a battery inside and it is written made in China. Oh my God, that's amazing. It has an alarm system also, right? This white switch, if I put it, then the alarm will be active. So आप देख रहे हो कि मैं कैसे इस घड़ी के बारे में बोल रहा हूँ। आई एम सीइंग इट एंड आई एम स्पीकिंग इट। हर एक चीज के बारे में बोल सकते हो या किसी एक चीज के बारे में बोल सकते हो। यू जस्ट हैव टू स्पीक फॉर 1 मिनट। लिसन एंड स्पीक। इसमें आप जो भी सुन रहे हो उसके बारे में बोलना है। हर समय हमारे कान में कुछ ना कुछ तो चलते रहता है, शायद हम फोकस नहीं करते। तो जो भी आपको सुनाई दे रही है उसके बारे में बोलना है, जो नहीं भी सुनाई दे रही है उसके बारे में भी बोलना है। अगर कुछ सुनाई नहीं दे रही है तो उसके बारे में भी बोलना है। मैं बताऊंगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। Okay, right now I'm trying to listen to the sound of silence, but right now when I'm focusing, I can listen to the sound of my air condition. Yes, I can listen to that. I can listen to some of the sound which is coming from outside room. Some sounds are coming from my kitchen area. Some I can listen to my kids also talking to somebody. I've been listening to so many sounds. My God, so many times, so many sounds. They come but we never focus. I'm trying to listen to the sound. I'm trying to listen to the sound. तो आप देख रहे हो कि मैं साउंड के बारे में बात कर रहा हूँ। जो साउंड आ रहा है उसके बारे में भी, जो साउंड नहीं आ रहा है वो भी, और जो साउंड आ सकता है उसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ। So I'm listening to and I'm speaking. ये एक्टिविटी करनी है 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट टिप है फील एंड स्पीक। आप क्या चीज से फील कर सकते हो? आप अपने बॉडी से फील कर सकते हो। कभी कभी हम जब स्मेल करते हैं तो फील करते हैं, कभी कभी कोई चीज को जब टच करते हैं तो फील करते हैं, कभी कभी हम ऐसे ही अच्छा फील करते हैं, बैड फील करते हैं। तो जो भी आप फील करोगे वो आपको बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए, राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। यू नो, whenever I make videos, I feel happy. This gives me a lot of joy. I feel that I'm doing something for people. At least even if I die, these videos will always be there for you. And I know there are many people who will be even following me, subscribing me for this only. I feel really great that my existence is making some difference to people's life. I'm feeling really very lucky. Right now when I'm touching my skin, I'm feeling that I'm alive. I'm alive. I can feel my skin. That's the real shake hand. Friends, आप देख रहे हो कि जो भी दिमाग में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। मैं कुछ भी सोच नहीं रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ। This is the way we can be fluent. See and speak
listen to and speak and feel and speak, these are the part of our brain. देखना, सुनना और फील करना। और जब हम ये तीनों चीजों को बोलने लगते हैं तो जो भी हम बोलते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन में इनग्रेव हो जाता है, क्योंकि वही मैं देख रहा हूँ, वही मैं सुन रहा हूँ, वही मैं फील कर रहा हूँ और वही मैं बोल रहा हूँ। बी इन प्रेजेंट। बी इन प्रेजेंट का मतलब है कि जो भी आप एट दिस मोमेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट देख रहे हो, सुन रहे हो, फील कर रहे हो, बोल रहे हो, एवरी सेंटेंस शुड बी इन प्रेजेंट। इससे प्रैक्टिस होगा प्रेजेंट में बात करने का। राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम फीलिंग रियली वेरी गुड एंड दैट is giving me lot of happiness. I speak with you, I see you. Yes, I see you from the lenses and I see that you are smiling right now. I'm feeling really very good. I try to help you to speak in English and I know that you are taking my lessons very seriously. You are liking my lessons. You are watching my lessons every day and my lessons are helping you to improve your English. Even I go every day and do the research what I do so that I can help you to speak English more confidently. आपने गौर किया होगा कि मेरे सारे sentences present में थे. I go, I am doing, you are improving, I am making, like that. Next is my happy memories. जबकि मैं अपने मेमोरीज के बारे में बात करूंगा तो ऑफ कोर्स वो सारे मेमोरीज मेरे पास्ट के होंगे, राइट? तो मैं बात करूंगा अपने पास्ट से रिलेटेड और मेरे सारे सेंटेंसेस पास्ट में होंगे। लिसन टू मी। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, आई फेल्ट सो गुड। I went to the hospital. Even doctor invited me to get into the operation theater. I went there and I saw my baby for the first time. I took my baby on my lap for the first time. I was so happy. I was thrilled. And later on, my son was also born. And I was literally very happy. I felt myself very lucky that yes, now I have my son and daughter. It was the best day of my life when I saw my daughter was holding my son. I still remember the journey. I started with my wife and then my daughter was born and my son was born. I really want to thank God. Whatever happened in my life, I feel I was always blessed. तो आपने देखा कि मैंने सारे सेंटेंसेस पास्ट में किए। I did, I saw, my daughter was born, my son was born. सारे सेंटेंसेस पास्ट में थे। This is very much important. Future vision and mission. इस एक्टिविटी में क्या करना है? 1 मिनट के लिए मुझे जो भी बोलना है वो फ्यूचर से रिलेटेड बोलना है। मेरे सारे सेंटेंसेस फ्यूचर में होंगे। जब भी आप कोई पर्टिकुलर टेंस में बात करते हो ना, 1-2 सेंटेंसेस प्रेजेंट पास्ट से हो सकते हैं, बट 95% sentences future के होंगे. My vision in life is to create 5 lakh English communicators from India. This is my goal. For this, I will be planning a lot of activities. I know with those planning, I will be getting many coaches. The more I will get my coaches, they will create more students. Yes, it is very important because I can't do everything. I will need maximum helping hands. My coaches will be my helping hands. I will be telling my coaches what to do, how to teach so that they will help the students more effectively. My coaches will also improve and my coaches will help their students to be an efficient speaker. And I will take coaches from different cities of India so that they can cater to their city students. So I have a bigger vision and I have a bigger mission also. And now the final countdown. जैसा मैंने बोला था ना कि लास्ट वाला मेरा फेवरेट है. This is my favorite क्योंकि इसमें चैलेंज है और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इस चैलेंज को लो. This is going to change your life. And this challenge name is 1:1:1 challenge. What is this 1:1:1 challenge? Because ये चैलेंज है 1 मिनट का और इस 1 मिनट में आपको हर 1 सेकेंड 1 सेंटेंस बोलना पड़ेगा. That means 60 seconds 60 sentences. चलो मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ. You will speak 48 sentences in 1 minute. Are you ready? 48 to 50 sentences. इससे पता चलेगा कि आप सच में कितने फास्ट बोल सकते हो. तो इस सेशन में क्या करेंगे? हम टेंस का यूज करेंगे. जी हाँ, टेंस
टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये 4 टाइप के सेंटेंस हम बोलेंगे और वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सेंटेंस को चूज करते हैं एंड द सेंटेंस इज यू स्पीक इन इंग्लिश। Ready? You speak in English, you are speaking in English, you have spoken in English, you have been speaking in English, you spoke in English, you were speaking in English, you had spoken in English, you had been speaking in English, you will speak in English, you will be speaking in English, you will have spoken in English, you will have been speaking in English. You do not speak in English, you are not speaking in English, you had not spoken in English, you had not been speaking in English, you did not speak in English, you were not speaking in English, you had not spoken in English, you had not been speaking in English, you will not speak in English, you will not be speaking in English, you will not have spoken in English, you will not have been speaking in English. Do you speak in English? Are you speaking in English? Have you spoken in English? Have you been speaking in English? Did you speak in English? Were you speaking in English? Had you spoken in English? Had you been speaking in English? Will you speak in English? Will you be speaking in English? Will you have spoken in English? Will you have been speaking in English? Do you not speak in English? Are you not speaking in English? Have you not spoken in English? Have you not been speaking in English? Did you not speak in English? Were you not speaking in English? Had you not spoken in English? Had you not been speaking in English? Will you not speak in English? Will you not be speaking in English? Will you not have spoken in English? Will you not have been speaking in English? ये पूरे एक्टिविटी को करने में आपको 10 मिनट आज लग रहे हैं, कल 8 मिनट लगेंगे, परसों 7 मिनट लगेंगे। इससे तो पता चलेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने जल्दी जल्दी बोला, ये सारी चीजें मैंने याद की है पहले, वो दिन रात करके पढ़ पढ़ के नहीं बैठाया दिमाग में, उसको बोल बोल के दिमाग में बैठाया, तो आपको भी बोल बोल के दिमाग में बैठाना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट कि आप सेंटेंसेस बोल रहे हो और लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि दिमाग से ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो अगर ये लास्ट वाली चैलेंज 1 मिनट से बढ़ के 2 मिनट भी लगे या 3 मिनट भी लगे, नो टेंशन, लेकिन टारगेट देना है अपने आप को दैट वन डे आई विल स्पीक ऑल 48 सेंटेंसेस इन 1 मिनट। सो दोस्तों, टेंस इंपॉर्टेंट है, आपको ये 48 सेंटेंसेस सीखने पड़ेंगे और इसको अच्छे से सीखने के लिए आपको ये टेंस का वीडियो देखना ही पड़ेगा। प्लीज इस टेंस के वीडियो को अभी अभी जाके देखें, बहुत मस्त वीडियो बना है आप लोगों के लिए।